Good morning, students. Now, in today's class, we'll start with the next compound, that is calcium oxychloride, means CaOCl2. The common name of calcium oxychloride is bleaching powder or chlorine of lime. It is prepared by passing the chlorine gas through slag lime or calcium hydroxide till the gas stop reacting with it. क्लोरीन गैस जो भी उसको हम जो फ्रेशली प्रिपेयर स्लैक लाइम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, उसके अंदर से हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे। अनटिल तब तक पास करेंगे जब तक कि क्लोरीन गैस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो होता है, गैस उससे रिएक्ट करना स्टॉप नहीं करते। आफ्टर द completion of the reaction, we will get our product, that is bleaching powder plus H2O, साथ में हमको उसमें वाटर भी मिलेगा। It is the preparation for calcium oxychloride. It is the laboratory preparation. Next, the properties. The properties of the calcium hydroxide. It is yellowish white powder. ये येलो कलर का पाउडर होता है. It is soluble in water. जैसे आप उसको वाटर के अंदर डालेंगे, it dissolves in water. When CaOCl2 means calcium oxychloride reacts with air in which there is the presence of carbon dioxide, it reacts with carbon dioxide and gives chlorine gas. Means जैसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एयर के अंदर छूते हैं, वो एयर के साथ में रिएक्ट करता है और इन द एयर देयर इज द presence of carbon dioxide. When calcium oxychloride reacts with carbon dioxide, it produce or it liberates chlorine gas. So here we complete the preparation and the properties of the calcium oxychloride. Next we'll read about the uses of the calcium oxychloride. It is used in paper industries, means हम पेपर वगैरह बनाते हैं, in newspaper industries and the paper which we are using in our books and copies. In this we will use the calcium oxychloride. Second use, it is used in textile industries. Textile industries में जो कपड़ों का काम होता है, उस industries में भी we will use calcium oxychloride. Third one is in the manufacture of chloroform. क्लोरोफॉर्म जो होता है, इट इज यूज एज द एनेस्थीसिया. क्लोरोफॉर्म को हम एज एनेस्थीसिया यूज करते हैं. तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म इट इज यूज. फोर्थ, इट इज यूज इन द स्टरलाइजेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर. जो वाटर होता है उसको और स्टरलाइज करने के लिए, उसको और प्योर करने की वी विल यूज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग अनश्रिंकेबल वुड. श्रिंक मीन्स लूज इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जो वूल जो होता है वो अनश्रिंक रहे, वो सिकुड़े नहीं, उसके लिए भी वी विल यूज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ वूल. Next, it is also used as a oxidizing agent in organic and inorganic reaction. In the laboratories, when we are doing the chemical reaction, calcium oxychloride is used as an oxidizing agent in chemical reactions. So here we complete the preparation, properties and uses of the calcium oxychloride. The next compound is Na2HCO3, means sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. The common name of Na2HCO3 is baking soda. Baking soda is generally used in our kitchens, like Eno. Eno is a substitute of baking soda. Baking soda is prepared by the reaction of cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide, and this whole reaction is done in the presence of water. After the reaction, we will get sodium hydrogen carbonate and NH4Cl ammonium fluoride. So sodium hydrogen carbonate is prepared by the reaction of NaCl, ammonia, carbon dioxide and water, and after the reaction of all this compound we will get sodium hydrogen carbonate and ammonium fluoride. Next, the properties of the sodium hydrogen carbonate are, first, it is white crystalline solid. ये white होता है, crystalline means इसके जो crystals होते हैं they are shining and it is solid in nature, so it is white crystalline solid. Next, it is less soluble in water. ये water के अंदर less soluble होता है.
Aqueous solution is basic. Basic means Na2HCO3 है, जब वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा it gives OH minus ion. So इसका जो aqueous solution है वो कौन सा रहेगा? It is basic in nature. When it reacts with water or any other compound, it liberates carbon dioxide gas. So here all we have discussed about sodium hydroxide, carbonate, sodium hydrogen carbonate, that how it is prepared and what are their properties. Now we'll see the uses of the sodium hydrogen carbonate. The first property is it is used in food stuff. इसको हम food stuff के लिए use करते हैं. Mainly it is used for the fluffiness of the compound or fluffiness of the food. मतलब जो food होता है उसको हम जब फैलाते हुए जैसे as in cake we are using the baking soda, the softness and the fluffiness of the cake. It is used in cold drinks. Cold drinks is that as you open the lid of the cold drink, the effervescence comes out, and this effervescence is of carbon dioxide gas. So baking soda is also used to prepare cold drinks. It is used as an antacid in acidity. हम इनो जो लेते हैं, इनो is also a substitute of sodium hydrogen carbonate of the baking soda. It neutralize the acidity in our stomach. It relieves itchy skin and sunburn. जब हमको itchy skin होती है, sunburn होती है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. It is also used in making baking powder. Baking powder बनाने भी हम इसका यूज़ करते हैं. Next, it is used in fire extinguishers. Fire extinguishers में हम इसका यूज़ करते हैं. As कहीं पे भी अगर आग लगी होती है और जैसे हम इसका लीड ओपन करते हैं, the effervescence of the carbon dioxide comes out and it stops fire, because for the fire oxygen is needed. When carbon dioxide gas is present there, the burning stops. So in fire extinguisher the baking soda is also used. So here we completed all the uses of baking soda. Now our next compound is sodium carbonate. The common name of sodium carbonate is washing soda. How it is prepared? Washing soda is prepared by the solvay process. It is completed in 3 steps. In the first step, a cold and concentrated solution of sodium chloride is reacted with ammonia and carbon dioxide, and by this reaction we will get sodium hydrogen carbonate in first reaction. After completing this reaction, sodium hydrogen carbonate is separated by filtration. It is dried and heated. On heating sodium hydrogen carbonate, it decomposes and it gives sodium carbonate. This anhydrous sodium carbonate is dissolved in water, again recrystallize, and we will get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization. So this is whole is the process is the solvay process. In the solvay process सबसे फर्स्ट में हम कोल्ड और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा, उसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से. जब हमने ये रिएक्शन करें तो उससे हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा. इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फिल्टर करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, एंड आफ्टर ड्राइंग इट हम उसको हीट करेंगे. जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, ये डिकम्पोज हो गया, ये टूट गया और उससे हमको सोडियम कार्बोनेट मिला. सोडियम कार्बोनेट जो था वो इस समय एनहाइड्रस होता है, मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं. जब हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद हम उसको वापस से रिक्रिस्टलाइज करते हैं, उसको वापस से फिल्टर करके उसको सुखाते हैं, तो हमको उसमें से वॉशिंग सोडा जो हमारा मेन कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट विल गेट. हम उसमें से फिर हमको उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है. दिस इज द होल प्रोसेस हाउ sodium carbonate is prepared by the solvay process. What are the properties? It is white, transparent, crystalline, solid. It is soluble in water. वो water के अंदर soluble होता है. The solution of washing soda in water is alkaline. Alkaline ही नीचे होता है, basic होता है, which turns red litmus to blue. जो कि red litmus को किस में change कर देता है? Blue litmus में change कर देता है.
It has cleansing property. Cleansing property मतलब it is hard in nature, it is basic in nature. So जिस पर भी हम इसको डालेंगे वो उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देगा. So it is also used in the formation of detergents and soap. So it has cleansing property. Here we have completed the properties of sodium carbonate. Next, the uses of the sodium carbonate. It is used in laundries and softening of water is washing soda. लूंड्रीज में मतलब जब भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोडियम सिलिकेट, पेपर, बोरेक्स, सोप पाउडर एंड एक्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट. जब हम लैब में केमिकल रिएक्शंस कराते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं. It is used in textile and petroleum refining. Petroleum refining means जो क्रूड ऑयल होता है जब हम उसको रिफाइन करते हैं, जब हम उसको प्योर करते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, जब हम मेटल्स के वेरियस कार्बोनेट्स बनाते हैं एट दैट टाइम वी विल ऑल्सो यूज़ द सोडियम कार्बोनेट. Here we completed the preparation, properties and uses of sodium carbonate. Thank you.